जाया चिट्ठियां आया चिट्ठियां नहीं आया उड़ी जुली कावा चन मोड़ा टुरिया जम्मू दे माजे चन मोड़ा टुरिया जम्मू दे माजे मैं पिछा रोनिया करनी आवाज़े अल्लाह खैरी मुड़े चन्ना लगियां लड़ाइयां चिट्ठियां नहीं आया चिट्ठियां नहीं आया उड़ी जुली कावा चन्ना दिया जाया चिट्ठियां नहीं आया चिट्ठियां नहीं आया। वाह 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 कुर्बान जी वाह। थोड़ी सी बातें करके मासूमा से भी सुनेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा बातचीत में हम म्यूज़िक को भी शामिल करें ताकि अटेंशन डाइवर्ट रहे, क्योंकि पूरी कौम सोगवार है। जहाँ हुकूमत जो कर रही है, आप देखें फॉरेन ऑफिस में ये कॉन्फ्रेंस को मैं पूरा देख रही थी, सुन रही थी, बड़ी अच्छी बातें मैं देखती हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दैट्स वेरी गुड। लेकिन मिशाल जी क्या करें, हमने देखें अफगान रिफ्यूजीज़ कितने साल 30 साल उनको रखा, हम उनके लिए फंस गए देखा जाए, आई एम डेयरिंग टू से दैट। और कितनी हमने उनके लिए खुद हमने कितनी तकलीफ़ें, आप देखें ये टेररिज्म की जंग में हम ज़बरदस्ती एक उसमें फंसते गए। और बांग्लादेश ने आप देखें स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर दिया पानी के थ्रू, कितने बच्चे, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड टू सी देयर पिक्चर्स। आज बल्कि वो टर्किश फर्स्ट लेडी गई हैं बांग्लादेश टू मीट देम। आप क्या समझती हैं कि ये जंग के ज़रिए तो नहीं हल हो सकते ये मसले, मुज़ाकरात होने चाहिए? बिल्कुल, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ह्यूमैनिटी को बैरी किया जा रहा है आज के दौर में, इसकी मिसाल नहीं मिलती है हिस्ट्री में। और इस वक्त हमें ये भी देखना है, जो आपने अफ़गानिस्तान की बात की है, कि जो वॉर, प्रॉक्सी वॉर्स हिंदुस्तान खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, so that Pakistan gives up its support on Kashmir, that is through अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी पब्लिक है जो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के हक़ में है, और भाईचारा, ब्रदरहुड। मेरे अपने दादा अफ़गानिस्तान से थे, काबुल से उनका ताल्लुक़ था, तो बार्टर सिस्टम का भी एक ज़माना आया था बिटवीन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक लॉबी है वहाँ पे, एक माइंडसेट है जो, और जिस तरह इंडिया की इंटरवेंशन है वहाँ पे काबुल उनके कैपिटल में, तो हम लोगों को लार्जर इंटरेस्ट में पूरे रीजन के अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ें मुज़ाकरात के थ्रू हल हों, क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि हर लिहाज से इस रीजन में आग हो, ताकि जो सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो सैबोटाज हो। और आपने जो पहले बात की ना कि कोई उनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट्स नहीं है चाइना और रशिया के साथ, बट आजकल का जो दौर है वो है अबाउट ग्लोबल इकोनॉमीज। बिल्कुल उनका ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सीपैक के अंदर, उनकी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे किसी किस्म की जंग का खतरा हो, तो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगी वो सारे ममालिक जो सीपैक में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि कश्मीर का मसला हो, अफगानिस्तान का मसला सेटल हो, अमन आए यहाँ पे। और जहाँ तक अभी बर्मा की बात है, अब देख लें ये वही मोदी हैं जो कि थपकी दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं सूची को जाके, और क्योंकि वो भी इन्वॉल्व है, ही इज अ किलर, बुचर ऑफ गुजरात। आपके लिए चलते हैं आस्ताना कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत, जहां पर OIC साइंस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो गया है। एक बार आपको फिर आगाह करेंगे कि इस वक्त आपको लिए चलते हैं कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना, जहां पर OIC साइंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 22 सरबराहान मुमलिकत हुकूमत शरीक हैं और पाकिस्तान की जानिब से सदर ममनून हुसैन जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। And we see that the number of crimes against Muslims is growing in the Western countries. We express our concerns about the latest tensions and events in Myanmar. We have to continue our open dialogue at the platform of the United Nations to discuss and fight against violence and arbitrage. Third, more than 1.5 billion people of the Islamic world today, unfortunately, lack unity. Therefore, we're having great losses because of that.
Therefore, we see that the external forces are using this disunity and division into confessions for their own benefit, and we need to eliminate this. Fourth, we see that among rapidly developing countries of the world, many Muslim nations are falling behind. And some experts say that this slowdown of the development of the Islamic countries is caused by the religion itself, but this conclusion is far from being true. If we dig into history, the Islamic civilization used to be at the center of the global development, and it made a great contribution to the prosperity of mankind. It is worthwhile to mention three pillars of the digital economy, particularly numbers, algebra, and algorithms. And this relates to one outstanding scientist. He was born in the Amudarya region 12 centuries ago. It's Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. The term algorithm is the Latin transcription of al-Khwarizmi's name. And if the West kept using the Roman figures until present days, they wouldn't have an understanding of an algorithm at all. The first trigonometric functions relate to the name of Al-Battani, the outstanding mathematician and astronomer. And the global development of science, math, and medicine would be impossible without the work of these scientists. And right now we see a new possibility for the development, and we have to use this opportunity. In the hadith of the Prophet, there are such lines. If one takes the path of search for knowledge, the Heavenly Father will lead him to the paradise. And if one is looking for knowledge and research, it equals hundreds of prayers. Therefore, in this regard, we have to take a specific action plan. And in this regard, we need to start the Special Council of the OIC to discuss modern development issues. And I think it's right to establish the Special Fund of Science and Innovations. Dear participants, Islam is the rapidly developing religion, and it's the fastest growing religion of the 21st century. In the hadith of the Prophet, it says that one needs to look for knowledge from cradle to grave, and our main task is to bring about and bring up new intellectual elite which will be serving the Islamic civilization, implementing main and new ideas. Right now we see that the scientific research and developments of the Muslim countries account only for 0.5% of the total domestic product, and it's 2 or 3% of indicators cannot be compared to global indicators, because right now 615 researchers of the Islamic world come for per 1 million population, and it's 2.5 times lower if we compare it to global indicators. There are only two Nobel Prize winners from the Islamic world. It's Muhammad Abu Salam from Pakistan and Ahmed Hassan Zevail from Egypt. We have to change this situation. This year, Kazakhstan is implementing the special program of spiritual modernization, and it focuses on the modernization of public consciousness, spirituality, pragmatism, and development of knowledge. And in this regard, we believe that the Islamic world needs also to focus on spiritual modernization and novelty, because the mankind is close to the fourth industrial revolution. In 2017, the member states of the OIC showed good achievements and results in the field of scientific and technical and innovational development, and we can see it from the results of the Global Innovation Index. Among them, we see United Arab Emirates. They rank 35th, Malaysia ranks 37, Turkey 43rd, Qatar 49th, Saudi Arabia 55th, Kuwait 56th, and there are also other countries. We need to pay a special attention to the promotion of scientific research. For this purpose,
I made a decision to offer a reward for those people who made a great contribution to the development of science and technology, and today we will have the award ceremony for the first time. Second, innovation clusters are considered one of the most important elements of the promotion of science and economic restoration. And Kazakhstan has such clusters as Nazarbayev University and the Park of Innovation Technologies. We encourage the scientists and researchers of the member states of the Organization of Islamic Cooperation to work with us. Third, Islamic financing, particularly financing of science and innovations, is what we need to pay our attention to. And to this year, at the platform of the international exhibition Astana Expo 2017, we're going to establish the International Financial Center Astana. So it has already started functioning. It will focus on the development of the special Islamic financing instruments and green financing instruments. And I encourage you to have a close cooperation in the field of Islamic financing. In this regard, the Islamic Development Bank has a great potential in terms of introduction of science and innovations and financing of science and innovations. Fourth, the development of green technologies. In this regard, we are using the opportunity of establishment of the International Center for Green Technologies and Investments, and this center is going to be located at the platform of Expo, just like the International Financial Center. We are now hosting Expo 2017 with the topic of future energy, as you all know, and 115 states as well as 22 international organizations are participating in Expo, and your countries are among those participants. We were able to see lots of new ideas, researches, and technologies demonstrated at Expo and devoted to the topic of future energy. And it's quite symbolic that this summit is taking place during Expo. Fifth, we also need to develop our cooperation in the field of agriculture, and we need to unite our efforts to develop agricultural sciences and introduce new technologies. And in this regard, not only we have to enhance our agricultural capacity, but we also need to have a deep integration in the field of food security. And I believe that you all support the activity of the Organization for Food Security of the Organization of Islamic Cooperation. And Kazakhstan, on its part, sets a goal to improve the work of the Organization for Food Security. And the headquarters of this organization is going to be based in Astana, and it will start functioning very soon. Distinguished ladies and gentlemen, we see that the competitive advantage of our countries can be improved only through innovation and digital technologies. According to the information of experts, by the year of 2020, every fourth country of the world will have a digital economy. And keeping these things in mind, we started the state program of Digital Kazakhstan in our country. By 2021, every fifth Kazakhstani citizen will be able to use digital technologies. दौर हाजिर के जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने के लिए मुस्लिम ममालिक के तमाम सरबराहान मुमलिकत का एक नुक्ता पर मुत्तफ़िक होना जो है वो नागुज़ीर है। इस्लाम दुनिया में तेज़ी से फैलता हुआ मज़हब है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होने के लिए मिलकर काम करना होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में मज़ीद फतूहात और तहक़ीक़ात को जामे और मरबूत बनाने के हवाले से इस इजलास में शामिल तमाम सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत को मिलकर गौर व ख़ौज़ करना होगा। इस वक्त काज़ाकिस्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना में OIC साइंस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुमलिकत हुकूमत के इज़हार ख़याल का आपसे कुछ ही देर बाद जब पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन इस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख़याल करेंगे, आपको एक बार फिर आस्ताना लिए चलेंगे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। वेलकम बैक कुर्बान जी।
ब्रेक के बाद तुहाडी आवाज़ तो शुरू करिए, जल्दी नाल कोई गीत सुनाओ, बड़ियां गल्लां रह गईयां नूं जो तुहाडा दिल कर रहा है। कुकुआ सलानियाँ बोल, कुकुआ कुकुआ सलानियाँ बोल, हैं ओ केड़े देश, हैं ओ केड़े देश, कुकुआ सलानियाँ बोल, कुकुआ कुकुआ सलानियाँ बोल। कुकुआ दे बागां विच लानियां मैं जीरा, कुकुआ दे बागां विच लानियां जीरा, मां दिया पुत्रा भैणां दिया वीरा, कुकुआ सलानियां बोल, कुकुआ कुकुआ सलानियां बोल। कुकुआ दे बागां विच चरदियां गाइयां, चरदियां गाइयां, कुकुआ दे बागां विच चरदियां गाइयां, अल्लाह खैरी लिखियां असां सिर ते चाइयां, कुकुआ सलानियां बोल वे, कुकुआ कुकुआ सलानियां बोल। कुकुआ दे बागां विच लानियां बसते, कुकुआ दे बागां विच लानियां मैं बसते, अल्लाह खैरी मोड़े तैनू वतना दे रस्ते, कुकुआ सलानियां बोल, कुकुआ कुकुआ सलानियां बोल। This is a wish for you too, मिशेल जी। जनरल साहब, शॉर्ट क्वेश्चंस पे आती हूँ बिकॉज टाइम थोड़ा है और मैं जल्दी जल्दी मैंने एक वतन का नगमा भी सुनना है मासूमा से। जनरल साहब, काश क्या ना होता, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान ओनली, काश क्या ना होता, बिगेस्ट ट्रेजेडी क्या आपको लगती है? जल्दी से कि बात एक लाइन, आपने एक लाइन में जवाब देना है, ये एक लाइन से ऊपर कोई जवाब नहीं है किसी का भी। बिगेस्ट ट्रेजेडी ये है कि वी हैव नॉट पेड मच अटेंशन टू आवर एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूँगी बांग्लादेश का अलग होना। क्विकली जी, काश क्या ना होता। बस रियलाइजेशन जो हमारी यूथ में आई बिलीव अभी तक इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो इस कुर्बानियों से पाकिस्तान वजूद में आया, पाकिस्तान मूवमेंट में लाख, तो दैट्स व्हाट इज द ट्रेजेडी। काश क्या ना होता, क्विकली। काश हम सब में दिखावा ना होता। अच्छा जनरल साहब, व्हिच इज द बेस्ट मिनिस्ट्री टुडे इन योर ओपिनियन? क्विकली। ये नए नए सारे बने इस वक्त तो कोई नहीं। अच्छा, आप उनको टाइम देना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि इन बर्मी हालात का एक हल एक जुमले में। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा शुड शेयर द बर्डन एंड पुल कलेक्टिवली। कश्मीर का हल एक जुमले में। आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जाए। जी आप मैडम? दोनों बर्मा का, हाँ, उसका सिंपल एक ये है कि यूएन को सेफ और वॉलंटरी अंदाज से जितने भी लोग डिस्प्लेस्ड हो गए उनको अपने वतन वापस क्यों ना हुआ है वारिस हैं, उसके लिए अश्योर करने के लिए उनको बेशक नेटो फोर्सेस यूज करनी पड़े मगर करें। और कश्मीर का मिनिस्टर शाहिद खाकान वन लाइन मैसेज फ्रॉम यू फॉर मी कश्मीर के बारे में, because Kashmir is the pillar of Pakistan's foreign policy. One sentence. It should not be put on the back burner but on the very very front burner. Okay. General Sahab, message for Prime Minister? I think he should continue doing the way he's performing. His performance is message definitely... for Khaja Asif, Foreign Minister? He should spend more time in the office and try to pick up the message subjects. For Imran Khan? Imran Khan should be realistic and before uttering anything should get down to his own homework. Normally he talks without the homework.
What would you like to tell to Maulana Fazlur Rahman? He should better leave us alone. To Asif Ali Zardari? He should also quit and get settled somewhere. Get His settled shadow somewhere? has destroyed PPP. Which is the best chief minister today? Shahbaz Sharif. Me too. I also. Ji, Mishal ji, a message for Khaja Asif, foreign minister. यही है कि सीपैक है, कश्मीर है, जो बड़े बड़े काम हैं उन पे फोकस करें और उसी के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करें. मैसेज फॉर इमरान खान. यही है कि ऑल द पार्टीज ऑन नेशनल इंटरेस्ट शुड बी ऑन वन पेज, नॉट जस्ट इमरान खान, फॉर नवाज शरीफ, मोहम्मद मियां नवाज शरीफ एंड ऑल पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी, सब नेशनल इश्यूज पे एक नहीं है उस तरह जिस तरह होना चाहिए. अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान नीड्स डैश मासूमा जी. Pakistan नीड्स डैश. Pakistan needs good music because I'm a musician. Okay. And realization as well. It's We're very already important. lucky to have singers General like you Saab, people. one word for Chaudhry Nisar. One word, he's not a one word, he's an institution. Upright. Upright. He is I can upright. help you. Yes, yes. I can help you. One word for Begum Kulsoom Nawaz. She's a lovely lady and very brave, very sober. Wonderful human being. Yeah, I know her personally also. She's a wonderful lady. Okay ji. Masooma ji, one word for Maryam Aurangzeb, Minister for Information. She's done a lot for the broadcasting, and I mean, like, I have had personal experiences with her. बस ये है कि चलें, आपसे मैं दिल चाहता है बातें ज़्यादा ना करूं. आप हमें मुल्क और कौम के लिए कोई मिली नगमा, हमारे शहीदों के लिए कोई सुनाए. ताज़ा ताज़ा 6 सितंबर गुजरा है. जी जी बिल्कुल. और तो लेट्स गिव ट्रिब्यूट टू देम. हाँ बिल्कुल.